تو پھر کنسلٹنٹ طریقہ کو میوٹ کر دو جب وہ یہاں سے جا کے نا. Okay, so Adnan, I think we have some attendees starting, so we can start off with the video and take it from there. Thanks so much. Wonderful. Thank you so much, everyone, for being online. Assalamualaikum, hello, and welcome to our webinar for Revitalizing Youth in commemoration of the Youth Skills Day that was actually yesterday. So PPF is really excited to be holding this webinar and actually have some exciting panelists and exciting people online to talk to you about this. I won't take too much time because there's a lot that we do need to cover, but I'll talk a little bit about the agenda that we have for today. Jo hamara plan hai is that we will talk a little bit around jo hamare programs and PPF mein around youth skills development and connecting them to entrepreneurship. Kis tarah hum unko sahi wali skills de sakte hain, especially in the time of COVID, and then take them on and mainstream them into the path of entrepreneurship. That is the aim. So, one second. So we will start off by a little bit of an introduction of the programs, and then we'll move into talking to two actually representatives from one of our programs that has just happened in the past. We'll talk to them a little bit about their journey, unne kya kiya during the program, aage unki entrepreneurship journey kya thi, aur phir uske baad jaake unki jo earning thi, wo kaisi thi, and aage COVID mein kya unke effects hue. After that, we'll dig into our panel with some amazing public sector and private sector individuals jo hame bata sakte hain ki kya ho raha hai in this space right now, and then also ki hum COVID mein kis tarah isko thoda sa change kar sakte hain in terms of how we can actually cater to the current needs and future needs of the youth. And uske baad we'll open it to questions and answers. Agar aapke waise bhi koi questions ho, aap please chat mein likh sakte hain while we're having the webinar, or last jo few minutes honge usme I can address those questions. We can ask panelists or just abhi aapne puchna hai, including the beneficiaries or anyone you want. Okay, wonderful. So just a short introduction. My name is Rahma Labib and I'll be moderating the panel today. And I am actually the innovation specialist for strategic innovation at PPF. Looking forward, I will try my best to be bilingual. Jitna main kar sakti hu, utna main try karungi, and I can request everyone else to do the same. So let's start off. Hamare group head hai Arshad Saab, jo hame thoda sa batayenge around hamara jo program tha,
revitalizing youth for enterprises, and हमने उसमें किस तरह हमने youth को skills दी और आगे हम क्या करने जा रहे हैं within PPF and how everyone can contribute. Irshad Saab, over to you. Thank you very much, Roma. First of all, very warm welcome to the distinguished panelists ji, जिसमें respectable रोशन बरोचा साहिबा, अदील हैं, जरताज, आमिर साहब, such a great mix of public private sector जी. और जो टॉपिक है मेरे ख्याल में the most important topic 2001 में ये टॉपिक इमर्ज हुआ था यूथ का कि जी why engagement with the youth is important. If you all recall कि जब वो हमारे सर का दर्द बने थे, वो हमारा यूथ बल जो था, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आ गए थे तो तब स्टेट को महसूस हुआ कि नहीं जी इनके हवाले से कुछ करना चाहिए हमें. आई वुड सिंसियरली से कि जी कोविड ने मोर और लेस वही सिचुएशन बना दी है यूथ के लिए दोबारा से. 2 साल की जो टाइम है उस टाइम पीरियड में मुझे और नहीं पता, मेरा बच्चा जो है खुद वो रिबेलियस है, वो कुछ हो नहीं पा रहा, काम नहीं है एंड ऑल दैट, प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. सो इमेजिन जो बाकी यूथ बल्ज है और कोविड में के हवाले से जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसको हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो मास स्केल पे नहीं है, तो उसकी कमी की वजह से बिजनेसेस को देख लें, एंगेजमेंट्स को देख लें, बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हुई हैं और दैट इज़ रियली इफेक्टिंग द यूथ बल्ज. तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवाइटलाइजिंग यूथ एंगेजमेंट. मैं तो कहूँगा एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोविड एंड पोस्ट कोविड अगर आप कह सकते हैं, तो उसमें भी हमें इसको देखना है. बट बिफोर दैट मैं फॉर दोज पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट जिनका पीपीएफ के हवाले से थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा मैं क्विकली बताऊं कि जी पीपीएफ जो है 2000 में ये बनी. एपेक्स इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 3 इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं. इसके अलावा 8 जो हैं बड़े डिस्टिंग्विश्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबरान हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, जो कि मुख्तलिफ शोबाजात से हैं, बड़े डिस्टिंग्विश नाम हैं. हम 140 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द पाकिस्तान जो है हम काम कर रहे हैं. 130 इदारे हैं, छोटे बड़े और दरमियाने. पीओज हैं जिसे हम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा इम्प्लीमेंटिंग आर्म है, उनके साथ. और फिर हमारा एक पूरा नेटवर्क है जिसमें मुख्तसरन 1000 के करीब जो हमारे LSOs हैं, लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर द कॉन्ग्लोमरेट ऑफ COs एंड VOs, द विलेज ऑर्गेनाइजेशंस. और फिर हमारा जो बेसिक यूनिट अगर आप कह दें विलेज लेवल पे, तो वो VOs है, रफली कोई 17,000 के करीब हम उनके साथ काम कर रहे हैं. तो हमारी बुनियाद जो है वो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज समथिंग जो कि हमारा फंडामेंटल है. बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, एज आई हैव सेड, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट से लेके इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम हैं, इंफ्रा के हैं, सोशल सेक्टर में एजुकेशन को हम कवर कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर हमारा काम है. और लेटेस्ट जो एडिशन है जिसमें रोमा इज द पार्ट, इनोवेशन यूनिट है, जो कि हम समझ रहे थे कि ये वो यूनिट है जो कि डिसरप्टिव डेवलपमेंट के ऊपर इनका मोटो डिसरप्टिव डेवलपमेंट, जहाँ पे आके नए और फ्रेश आइडियाज के साथ आना और वो जमूद को तोड़ना, स्टेटस को तोड़ना इन डेवलपमेंट. तो बेसिकली ये इनका काम है. एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि जी डिफरेंस क्या है पीपीएफ का बाकी इदारों के साथ. एक तो ये है कि जी हमारा जो टारगेट है, फोकस है, वो एक्सट्रीम और अल्ट्रा पुअर हैं इन दोज अंडर सर्व डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे किसी की पहुंच या नहीं है या बहुत कम है. और उसके लिए जो हमारा टूल जो हमने इस्तेमाल किया है वो मल्टी पावर्टी असेसमेंट का टूल है, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट बैंड से हमने वो पावर्टी वाले इलाके, एक्सट्रीम पावर्टी वाले एरिया जो हैं इन साउथ ऑफ बलूचिस्तान, इन साउथ ऑफ पंजाब, सिंध के बहुत इंटीरियर के एरियाज, केपी के जो हैं बहुत सारे जो हैं साउथ के एरियाज, जीबी के बहुत सारे ऐसे एरियाज जो कि बड़े फार फ्लंग एरियाज हैं. तो वहाँ पे बेसिकली हमारा फोकस जो है वो उन एक्सट्रीम और अल्ट्रा पुअर लोगों के साथ है.
یوتھ جو ہے ہمیشہ سے میں یہ کہوں گا کہ جی پی پی ایف کا ایک پوائنٹ آف سینٹر رہا ہے, کیونکہ پی پی ایف بلیو کرتی ہے کہ جی جب تک ایک پروڈکٹیو انگیجمنٹ یوتھ کے ساتھ ہوا, وہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کیوں نہ ہو. انسٹیٹیوشن میں اگر آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہو تو انسٹیٹیوشنز میں بھی مونوپلی ہوتی تھی ان لوگوں کی جو کہ ریٹائرڈ ہوتے تھے, یا وہ بڑے بزرگوں کی مونوپلی ہوتی تھی کہ جی وہ بات کرتے تھے اور انہی کی بات کو حتمی سمجھا جاتا تھا. لیکن اس چیز کو توڑتے ہوئے فرسٹ ٹائم پی پی ایف نے کہا کہ جب تک نوجوان ان گروپس میں شامل نہیں ہوگا اور جب تک وہ اپنا ایجنڈا نہیں بتائے گا اور جب تک اپنے ایجنڈا پہ کام نہیں کرے گا, وہ کمیونٹی آرگنائزیشن بیسکلی ایک بہتر طریقے سے ترقی کر ہی نہیں سکتی. تو ہمیشہ سے پی پی ایف کا ایک ایریا آف سینٹر تھا یوتھ انگیجمنٹ, اور اس سلسلے میں کچھ چیدہ کام جو ہم نے کیے, اس میں رفلی کوئی 200 کے قریب یوتھ سینٹرز ہم نے بنائے, اور بیسکلی مقصد یہ تھا کہ جی کیسے ایک انفارمل اسپیسز ہم ان یوتھ کو دیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ انگیج کر سکیں ان پروڈکٹیو ڈائلاگ. کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے راستے بزنس کے حوالے سے, لنکیجز کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے, اور سوشل کوہیژن کے حوالے سے کیسے وہ پروموٹ کر سکیں. تو ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں, جو کہ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دا سٹی بینک جی, بہت بڑا ان کا یہ کام ہے ہمارے ساتھ, بہت بڑا ان کا سپورٹ ہے. وہ ریوائٹلائزنگ دا یوتھ انگیجمنٹ 1 اور 2, جس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے فیز میں کوئی 300 کے قریب یوتھ کو ہم نے ٹرین کیا, جس میں سے 50-50 150 بوائز 150 گرلز, اور بڑے ریموٹ ایریاز میں زیارت اور قلعہ سیف اللہ آپ امیجن کریں بلوچستان کے ان ایریاز میں. اور پھر RYE2 جو کہ ملتان, بھاولپور, کراچی اور سکھر میں مزید 200 کے قریب یوتھ کو ٹرین کرنا, جس میں 100 کے قریب, پھر بھی 50-50 ریشو ہے دونوں کی. میں پھر اس پہ ایمفیسائز کروں گا کہ جب تک بچے اور بچیاں ایکول اپرچونٹیز ہم ان کو نہیں دیں گے اور ایمفیسس ایک سیکس پہ ہوگا, تو پھر میرے خیال میں وہ انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہم کسی طور پہ اس کو نہیں کہہ سکتے. اور اس حوالے سے بھی اسکل ٹریننگز دیں, لائف اسکلز کے حوالے سے اور فائنانشیل لٹریسی کے حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. اور ایک جھلک جو ہے آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھ لی ہے, اور ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی ہم بنا رہے ہیں تقریباً 15 منٹ کی, اور فار شیور وہ ہم سب پارٹیسپینٹس کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے. سو ود دس تھینک یو ویری مچ ونس اگین جی فار کمنگ, فار جوائننگ, اینڈ اوور ٹو یو رما. Thank you so much, Irshad Saab, for such a comprehensive understanding of what PPF does and also our projects in youth. I think ہماری کافی ساری آگے بھی vision جو ہماری ہے وہ youth کو ہی cater کرے گی, especially in projects like innovation and things that Irshad Saab mentioned. ان ساروں میں we are trying کہ ہم ان کو digitalization دے سکیں. There can be a layer of innovation in terms of startup support and business support as well. So this is a very exciting topic for all of us. So we're very this conversation can go into many ways. So this is great. Ab agar hum next is pe aana chahein, and you saw a great video of one of our programs that we've done with youth, jahan humne bahut sare youth entrepreneurs banaye and we trained for skills and things like that, jahan pe youth outcomes hue hain. So usme se we actually have 2 people jo humse baat karne aaye aur hamare sath stories share karne aaye hain. And I would love for them اگر وہ اپنی تھوڑی سی جرنی بتا سکیں, تھوڑا سا بتا سکیں کہ اس پروگرام نے ان کو کیسے ہیلپ کیا ہے, شاید کچھ چیزیں کہ آج کل ان کا کام کیسے چل رہا ہے, اور کووڈ کی وجہ سے اگر ان کو کچھ ہٹ ہوا ہے, تو دیٹ وڈ بی گریٹ. میں انٹروڈیوس کرتی ہوں حدیقہ, اور ان کے ساتھ امین اللہ ہیں. اور اگر آپ انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہیں اور تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہیں سب کو کہ آپ نے کیا, آپ ابھی کیا کرتی ہیں, آپ کی جو اسکلز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ کس طرح ہوئی ہیں, اور پروگرام کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I introduce myself. My name is Hadika. I'm from Simba, district Lespla, and I am a student of BS Education Department of SBK University. اور میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. جیسے کہ میں نے BRSP اور PFP میں کام کیا, تو اس سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملی. جیسے کہ مسلم باغ ایک بہت چھوٹا سا مطلب اس کو ولیج تھی,
ایک چھوٹی سی ولیج تھی جہاں پر لڑکیوں کے لیے کوئی بھی ایسی پہلے وہ نہیں تھی کہ لڑکیاں باہر جا کے کام کر سکیں. تو BRSP اور PPF کی وجہ سے یہ جو پروجیکٹ آیا اور بہت سی لڑکیوں نے وہاں پہ مطلب ایڈمیشن کروائے, پارٹیسپیٹ کیا, اور انہوں نے جیسے میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا تو وہاں پہ میں نے ایز اے پارٹنرشپ میں نے بہت کچھ کہا, مطلب فائنینشلی میں نے بہت انکم میں اضافہ ہوا, جیسے منتھ میں بھی 8,000 سے لے کے 12,000 تک. تو پارٹنرشپ میں بھی ہمیں بہت ہیلپ کی اور یہ ہماری پاکٹ منی بھی میں اضافہ ہوا. ونڈرفل, تھینک یو حدیقہ. اور کووڈ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈفرینس ہوا ہے؟ اگر آپ کو کوئی اور کسی اور چیز کی ضرورت ہے, کسی اسکل کی, کیا آپ آن لائن کچھ چیزیں لے کے جانا چاہتی ہیں, کووڈ کی وجہ سے کوئی ڈفرینس ہوا؟ کووڈ کی وجہ سے تو بہت کام پیچھے رہ گیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے جائے. اوکے, چلے, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس. اور یہ ہمارے پارٹنرز جو BRCN نے یہ ہمارا پروگرام امپلیمنٹ کیا تھا آن گراؤنڈ, اور انہیں کے آفس میں بیٹھ کے حدیقہ ہم سے بات کر رہی ہیں. امین اللہ بھی ہیں, وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. اچھا چلیں, تو جب وہ آتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ حدیقہ. گریٹ. So let's move on to, آپ نے اب سن لیا کہ تھوڑا سا ہمارے پروگرامس کے بارے میں اور آگے بھی ہم کیا ویژن رکھنا چاہ رہے ہیں. So let's talk a little bit to external individuals جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں. اور میں اب I won't introduce each one of them separately because I think I can't do justice. So I'm going to request all of them to introduce themselves. I'll call upon you one by one, our esteemed panelists. So agar we want to start off with Adil Shahid from Citibank, agar aapne introduce karna hai just to say hi and what relevant kind of work you've done with youth. So we would love to hear from you. Assalamualaikum. Thank you so much, Roma. Thank you, Rashad Saab, and all these team panelists. Looking forward to hearing from everyone. I am basically not an expert, I would say. I'm still learning and about the field, and it is a lovely, it's just like a fascinating space to be in, to be honest. I am basically the head of marketing and public affairs at Citibank. I also look after the Citi Foundation portfolio for Citibank. Citi Foundation is basically our philanthropic arm through which we are able to do interventions within various countries that we operate in. Pakistan Poverty Alleviation Fund has been a long-standing partner for around about, actually more than 15 years. which جن کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے کافی ساری programs پہ کام کیا ہوا ہے. One is our Micro Entrepreneurship Awards, which is one of our flagship events and partnership. In addition to that, now this program which we are talking about, the Revitalizing Youth program. So just to give a quick understanding, Citi Foundation is basically نے ایک commitment کی تھی آج سے 1 سال پہلے, which is called the Pathways to Progress Initiative. This was about 5 years ago. The commitment was to basically invest about $200 million across the world to prepare about 1 billion young people aged between 16 to 24 in the cities where we operate, where our presence is, for the job market or to set up their own businesses. And this commitment that we have, this target that we've set, is for us to actually prepare this 1 billion young people by the year of 2025. And this program that we're talking about was designed under this and was actually prepared under this umbrella. And just to quickly give you a rundown, basically this is also part of a more ہم لوگوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تھی ایک اور ہمارے پارٹنر ہے برٹش ایشین ٹرسٹ, ان کے ساتھ, where we mapped out the entire urban and the rural population of the country and determined how many young people will be out of work by the year of 2020, which was last year. And based on that roadmap, I mean, we've revised those numbers now, but based on that roadmap, at least there was a huge bulk of population that was required, جن کے لیے jobs create کرنا ضروری تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے 2015 میں جو ہے کو 5 ادارے اور آئیڈینٹیفائی کیے تھے جن کو ہم لوگوں نے انکیوبیٹ کیا, ان کے گورننس اسٹرکچرز کریٹ کیے, and to position them to get funding from international donors to operate at this space where they could create employment for youth. Similarly, in 2016 on our own, obviously, because given that the foundation itself has limited capacity, as we don't have a very big scale, we partnered with other partners and we set up a youth entrepreneurs incubator at LUMS.
And then from there on, we use that learning to develop more programs. And then coming to Pakistan Poverty Alleviation Fund, when we started the Revitalizing Youth Enterprise Program and designed that program, and we took a lot of learnings from what was happening there. And then we worked on this program with PPAF, and we're extremely thankful for all that, you know, that we've been able to achieve collectively under this partnership. And from there on, obviously, there is a phase 2, which Rishad Sahab spoke about, and you know, I looking forward to hear more from other panelists. So in a nutshell, this is basically our journey, and this is all that my experience has been in this space so far. Roma, I hope I didn't speak for No, too no, long. that's perfect. That's perfect. We needed that introduction from Citibank. Thank you, Adil. And I think that relationship with Citibank for PPF is wonderful because we're trying to reach out to all the rural populations in the same way that we also deal with urban populations, right? So it's very important to have that balance and not have a saturated market in one side. So thank you, Adil. And from there, I'll move the baton to Zartaj. Also from the startup space, has her own business, CuriosityNet. So if you want to start off talking a little bit about yourself and then also your business as well, and we want to know what you do and how we can, you know, be part of it. Sure. Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much for having me today, Roma and PPF and Irshad Saab. Lovely introduction for the PPAF. So I am Zartaj Ahmed, and I am the CEO and co-founder of CuriosityNet. I am basically a software engineer by qualification, a tech person, and then I went into business and setting up my own entrepreneurial venture. Before that, I am also an educationist, and I want to talk a little bit about STEM education, for which I have always been an advocate. STEM is basically science, technology, engineering, and math. I have been associated with education at a very young level, at the school level. But I think that is from where I realized that the change or the education or counseling in terms of career and in terms of future of work is required for students and for parents at the same time. So I have been working at a school. I have been involved in extracurricular and co-curricular programs where I believe that the skill set is developed for any individual. And so from there, I realized the importance that extracurricular and out of school experiences play in any individual's life. And that is from where I went on to establish initially PI Space Science Education Center, because space science is also something that is not very common, but it is fascinating for students. So through space science, we imparted space science education. And then from there, I started off CuriosityNet with my partner, Nahyan Farooq, and this is what we're doing. The objective of both of these initiatives and the mission, it is a passion project, I would say, is that we wanted to empower the youth. Now, it's very easily said than done, I would say. When we say that empower the youth, we wanted to add value wherever we touch them. So we work with university students who are studying. And when we do hiring and we interview them, there's a lot of gap that we see, which the education alone is unable to fulfill. And that is where we involve them in our projects. We hire them, we groom them professionally to the point where we guide them how to communicate effectively, how to present oneself. And that is what has led to the creation of CuriosityNet during COVID, during this pandemic, which posed a lot of challenges for all of us. CuriosityNet is a platform. It is a social media network, I would say, but it is a professional network. And we can call it LinkedIn for students. LinkedIn, hum easily isko samjhane ke liye kehte hain because all of us use LinkedIn and we know what it is. So I don't need to go into detail. The purpose of LinkedIn for students is to bring them on a platform which is global, give them cross-cultural experiences. They can be a part of a huge community from where they seek help and support. आपको पता है during COVID हम लोग सब एक इस विंडो के आगे कन्फाइन हो गए
اور ہمارے لیے پوری the world opens through this window as long as we have our internet connections working, and I hope میرا internet connection اب کہیں مجھے ditch نہ کرے. But yes, this is how the world has come. اس کے advantages بھی ہیں اور کچھ challenges بھی ہیں. And this is where I have seen even the teachers, because I've worked on teacher training as well. I've seen the teachers how their jobs has changed as well. ان کو بھی کس طرح سے اوور نائٹ اپنی ٹیچنگ کو بالکل چینج کرنا پڑا. اینڈ ہر اسکول کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا, بٹ دے ڈیڈ. سو بیسکلی کیوریوسٹی نیٹ کا مقصد یوتھ کو امپاور کرنا ہے, ان کے لیے انٹرنشپس, جابس, فیوچر ایجوکیشن کے مواقع دینا جہاں پہ وہ ان اپرچونیٹیز سے کنیکٹ کر سکیں. سو واٹ وی ڈو از وی آر اے میچ میکنگ پلیٹ فارم. ہم اس پہ یوتھ کو بھی لاتے ہیں, ارلی کریئر انڈیویجولس کو لاتے ہیں جو ابھی فریش گریجویٹس ہیں اور جو ابھی بھی یونیورسٹی کالجز میں پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک ریکروٹمنٹ ریڈینس ڈرائیو ہے جس کے اندر آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ اے لٹل لیٹر ایز ویل, بٹ جس کے اندر وی آر انگیجنگ the youth, the final year students of all the universities, and trying to train them on skills that are needed by the future of work. So yeah, so this is about CuriosityNet and a little bit about myself. Thank you so much, Sartaj. And I think you've touched upon such important points that we want to kind of talk about in this webinar, is that, you know, what is this evolving kind of skill set that we actually need to start talking to our youth about? Fortunately, unfortunately, but this is just the reality. And how has COVID shaped what the next steps will be, basically. So thanks so much for sharing, and we're going to dig a little bit deeper into that with you as well. I'm going to move to Ma'am Roshan, who's the chairperson at PPF as well, and she is doing some great stuff with Hunar. She's a development professional. I'm going to let her introduce herself because I probably can't do justice. Ma'am Roshan, do you want to go ahead? Thank you, Roma. Thank you very much. Thank you. Besides being a chairperson to PPF, let me tell you that my technical side has always been very close to my heart. Because I started my career in 1984 with TTC, where the refugees started coming, and we thought that technical training is a very important, it plays a major role. Because a youth of today, when you see, and you must have seen in COVID, if those people who have skill, who have talent, they never go, that never goes waste. It has always been utilized in some way or the other. Now here when we talk, you showed that little video about, because you see, we have to see youth from grassroots level till the eye level. We can't see youth of the urban only, but main youth stays, if you see, when you talk of 63% of the youth in Pakistan, so most of them are in the rural area. So their facility, if you see Balochistan doesn't have any factories or such things, very few in winter and all, but not in every district. So I feel that youth training skill is very important. Not only that, what I really felt and always been telling people around, that training given to the youth should be proper, regular training of 1 year. And not that we give off 2 months and then we just finish off and we feel that we have done our training part of it. That way, I don't agree. I always agree youth should be given proper 1-year training, and then they should go towards on-job training, and then they do their apprenticeship so that they can work here and they can work abroad and they have a more better opportunity. کیونکہ میں نے وہاں پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا تھا ایک ریمارک میں کہ پلیز اردو میں بات کریں تاکہ سب سمجھ سکے. تو لیٹ می اگین, I also forgot, so let me switch on to my Urdu and tell them, well, my Urdu is not that good, but anyhow I will do speak on Urdu. I believe the future of our lies with the youth. So in COVID, even if you see, if our people are talented, they have skill never goes waste. It has always been utilized. I'll give you one small example. Okay, we had a BRSP program in Hunar, and looking at these women coming from the rural area,
and having training at a site. So I called one of the lady and I just asked her, I wanted to see what she has to say. So I told her, okay, why are you doing this beautician course? What help is it going to be to you? And she told me, oh, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. मैंने कहा क्या फायदा क्या होगा? मैं अगर आपके जगह पे हूँ मैं ना करूँ. I just wanted to test on her. And she said, इससे मुझे बहुत फायदा. मैंने कहा क्या? वो कहती है देखिए हर जगह शादियां होती है, फंक्शंस होते हैं, जब भी हम वहां जाते हैं और वहाँ थोड़ा मेकअप कर दिया, थ्रेडिंग कर दिया, तो कहते हैं हमारे हमसाए वाले भी आ जाते हैं हमारे पास कुछ ना कुछ काम कराने के लिए. इसी तरह व्हेन आई आस्क्ड द टीचर द गर्ल्स कि आप लोग ये सोइंग कटिंग करते हैं तो ये क्या आपके घर तक महदूद होता है? शी सेड नहीं नहीं, विलेज के हम बड़े सस्ते में हम 200 रुपया में भी सूट सी लेते, 100 रुपया में भी सूट सी लेते और इन्हीं पैसे से फिर हम अपने घर की सब्जियां लाते. I really felt so good about it कि look at the empowerment of the women, look at the women working to support their family in a smaller way, but it was a beautiful way of telling and very much impressed by them. So I really think giving technical training to them with now in COVID even, they can sit at home and of course they can do a lot of work, they can do their stitching because stitching never gets waste, everybody has to wear clothes, clothes is one thing which everybody likes, so that is very good. For male, like you see, mason work never gets ending, welding, all these sorts of trades are very important if you want to see future because everybody cannot have government job. All students, all children or youth cannot be professional. Everybody cannot be a doctor or an engineer or working in the bank. So we have to look at all the levels. And especially for a rural area, I would say the best thing is to give them skilled training and give them such good training. So in future even, whether they are in their own place, own district, or whether they come to the city or whether they go to another very good opportunity, which we have got nowadays and training. And I would say PPF also should look into it because you see now CPEC program coming in where the youth will have a lot of opportunity if they have skill with them. So I think this training would be really very good. If I go on speaking, there's much to talk about it because first time when GIZ came in, they have the dual system in their country. This is what we also had in school. We had these comprehensive schools where we used to teach children training as well as skill training as well as education. So we had the dual system. Of course, Tibet people are here from, but he will be talking more on that. But Quetta, BTEFTA should have been in Baluchistan more stronger. It is not. But inshallah, 2 days back, I was being selected as a chair to the TTC technical, and I'm sure I'll do a lot and would love to do that. And taking PPF also there with PPF. PPF has already been doing a lot of technical work with the help of POs, and not over there, they've been doing it at the grassroots level where I've visited and I've seen them doing. So you feel really very happy about it, that the money is not going waste. It has been in the right place, और I hope कि इसी तरह हम youth को ज़्यादा में ज़्यादा strengthen किया जाए. And मैं तो बल्कि इस पे फोरम पे PPF को मुबारकबाद भी दूंगी कि जिस तरह का दिल लगा के, चाहे कोविड भी था, still people worked in the field, still they visited places, they made people feel that COVID is there, but you can still sit at home, you can do lot of good work sitting at home. And a very good thing about is, आप देखें ना, ये Zoom was never in fashion. COVID ने अच्छी बात भी कर दी, पूरी दुनिया को एक बना दिया, मिला दिया. We can exchange ideas, we can learn a lot from each other. अभी आप skill, ऐसी skill भी है जो घर में बैठ के हम cooking के, cutting के, हम बैठ के computers पे, internet से भी सीख सकते हैं. तो I'm very grateful. मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के program जो PPF भी करती हैं, they should continue their good efforts. And of course, very grateful to the donors like Citibank and everybody coming forward. It's always a joint efforts. With joint effort, only one can move forward. Thank you very much. I hope I didn't take much of your time. Thank you so much, Ma'am Roshan. No, that's great. Thank you so much. And that was so good because you were actually able to put context into, you know, what kind of trainings are being offered on ground in rural communities, or usko hum kaise
आगे लेके जाना चाहते हैं, this is the conversation we want to have today, right? उसको कैसे हमने shift करना है to more non-traditional ways and more relevant to more COVID related things. Or I understand that rural communities में वो एक limitation होती है, but how is it possible to actually Roma, वैसे I engage really both? feel, just if you don't, one thing I feel, Sure. everywhere on every forum I say, when we talk of microcredit or when we talk of loans to people, loans should be only given to those people who have some sort of skill training. We just give them money and they spend money here and there. So I feel zakat, when I always talk to the zakat people, don't make them give money like that. ये तो एक किस्म का वो beggar हो जाते हैं, सबको पैसे दो वो पैसे. Let them have skill and utilize that hard-earned money. People are giving zakat, that money should be utilized so that it is for a long run they can do it. Take them to its sustainability. So I would also say in microcredit and all that, they should be first given training and then given money, so that money is utilized in a proper way. Completely agree, Ma'am Roshan. I think this is the next step, you know, providing some kind of training with the cash transfers or any kind of interest-free loans or any kind of loan that you're actually providing has become a necessity. So thank you so much, Ma'am Roshan. We'll dig a little bit deeper into कि हमने किस तरह उस in loans की kind of nitty-gritties में लेके जाना है, किस तरह हमने उनकी skills को support करना है through various things like cash transfers and things like that. So we'll dig a little deeper into that. And before that, I'll ask Amir Aziz Saab to also give a short introduction for himself and also TEPTA and, you know, just some of the things that TEPTA has been doing in the space with youth skills. Thank you, Roma. My name is Amir Aziz. I am working with the Punjab TEPTA for the last 5 to 7 years. Before this, I was in the telecom sector and serving for 20 years in different fields, from operation to program management, and then the service delivery of corporate and consumer services. Now with the TEPTA, I have different portfolios. I was posted in the operation department, then in the procurement, and now presently I will be looking after the placement of the skilled workforce in the industry. I will just brief about how the public sector is working in the TEVT sector. In nation side, we have a NAVTEC organization who is the regulatory body. He will set the policies and the job requirements, the skill set required, which is curriculum, accreditation, and all these stuffs are done by the NAVTEC. And all the provinces had different technical and vocational institutes, which are named as TEPTA, like TEPTA Punjab, TEPTA Sindh, and TEPTA Balochistan, KPK, and all provinces have their one. TEPTA Punjab is the largest institute, having a landscape of around 403 institutes across the Punjab. And it is the largest in sense of the infrastructure and in the sense of the enrollment which is provided to the youth of the Pakistan. Because our total enrollment in the year is 90,000, which we have raised the last 2 years by expanding a CM program for the Hunar Haat, which they are funding, and we are starting the evening shift in these institutes. And now our capacity went to 230,000, and we are covering around about all the industrial floors, because we are producing the skilled workforce for the industrial sector, for production sector, and we provide them this semi-skilled, skilled, and the supervisory level, all staff of the workforce we are providing them to them. Our courses, we have around about 18, covering 18 industrial sectors, and we have more than 2,000 trades or courses which are in our portfolio. And our courses varies from the duration from 3 months, 6 months, 1 year to 3 years even. And we are also conducting the 4-year basic graduation in technology. And now in this government, as per the new government, they have also established 4 technology universities in the Punjab to give a vertical mobilization of the skilled labor and skilled workforce. This is the first time happening in the Pakistan. This is the brief introduction about my organization and what we are doing for the placing of the right skills to the youth. Because देखें हमने हमारे पास जिस तरह PPF भी काम कर रही है और I love to कि everybody is working in the silos. If we join hands तो शायद public और private sector ज़्यादा efficiently deliver कर सकते हैं. जिस तरह Krusty Net ने कहा है कि they are just opening the windows for blue collar jobs, because there is no right of platform for offering a blue collar jobs to the industry or who is employer for them.
सिमिलरली जो PPF काम कर रहा है कम्युनिटी में, हमने USAID के साथ किया, GAZ के साथ कर रहे हैं। USAID में हमने साउथर्न पंजाब में, जहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव माहौल है, वुमेन्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, हमने वहाँ पे इतने सक्सेसफुल प्रोग्राम चलाए हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें हमने बच्चियों को टूल किट्स फ्री दी है, ये ब्यूटिशियन की, आपकी स्टिचिंग की मशीन्स हमने फ्री डोनेट की है, ताकि वो घर में बैठ के उसको अर्निंग हैंड्स बना सके। और वी हैव अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल स्टोरीज इन दैट वन। फिर दूसरा जो स्किल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो फॉर्मल स्किल सेक्टर है, दिस इज आल्सो वेरी लो परसेंटेज। इनफॉर्मल एजुकेशन में बहुत लोग स्किल साइट्स पे हैं, और वी आर जस्ट गोइंग टू कैप दैट वन, हाउ वी कैन गिव अ डॉक्यूमेंट टू देम और उनको स्किल सेट को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो फिर हमने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग। मकसद अगर कोई छोटा उस्ताद शागिर्द से भी उसने कोई स्किल सेट ले लिया है, तो एटलीस्ट वी शुड रिकॉग्नाइज हिम, ताकि वो ऑफिशियली अगर अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसकी जो होती है कि आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास एलिजिबल नहीं है, तो वो क्राइटेरिया फिल कर सके। और अमेजिंगली हमें ऐसे ऐसे लोग मिले इसमें कि जिनको टर्मिनोलॉजीज तो नहीं पता होंगी, लेकिन स्किल सेट उनका बहुत हाई था। तो हमने जस्ट उनको टर्मिनोलॉजीज, नॉमेनक्लेचर वो 2 दिन में बताते हैं, और फिर 1 वीक के बाद उनका एग्जामिनेशन बोर्ड ही लेता है, और उसको फिर हमें डिग्री सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब उस डिग्री सर्टिफिकेट के बाद वो अपनी वर्कशॉप खोलना चाहे, अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहे, व्हाट्स ही और शी कैन स्टार्ट इट्स ओन बिजनेस। जो हमने लास्ट ईयर, हमने 3 साल पहले अखुवत के साथ, क्योंकि देखिए हर जगह भी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्लाइनिंग में थी, और शायद हम इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान, तो हमने जो एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए अपना जो ADB का पैसा था, डेवलपमेंट फंड, वो हमने अखुवत को दिया फॉर रोटेटिंग सर्कल, के आप लोगों को जो टैप्टा के ग्रेजुएट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट फ्री लोन्स थे। वी आर टैप्टा इज पेइंग सर्विस चार्जेस टू द अखुवत, और अमेजिंगली उस 500 million with meet transaction about 2 billion rupees, or our beneficiary was about 48,000. These are girls and 45% are the females of them, and every girl, this is the loan ranges from 50,000 to 150,000. And if anybody want to expand its business, तो हमने उसको दोबारा repeat loan भी अखुवत ने दिया था, और its returning rate is 99.99. दिस इज वेरी गुड थिंग। जो मैडम रोशन साहब ने अभी बात किया था, हम लोगों को पैसा देने के बजाय स्किल्स दें और फिर उनको पैसा दें, ताकि वो चीज उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। और इसी चीज को हमने, ये जो गवर्नमेंट ने अभी पंजाब फेडरल गवर्नमेंट ने हुनरमंद नौजवान और ये कामयाब जवान लॉन्च किया है, तो हमने PM साहब से रिक्वेस्ट की थी, काइंडली इनको टाई करें स्किल के साथ। आप जो लोन देना चाहें, और थैंक्स नेशनल टीम कि उन्होंने अब पूरा पोर्टफोलियो, जो बच्चा स्किल सेट्स के या स्किल का पास आउट होता है, उसका उन्होंने एक साइकिल या प्रोसेस जो है फॉर डिलीवरी ऑफ लोन, वो रिड्यूस कर, शॉर्ट कर दिया, यानी उसको एक्सपायरली तरीके में 1 महीने में लोन मिल जाता है। और हमें जो कामयाब जवान ने, जो मेरे बच्चों टैप्टा पंजाब ने अप्लाई किया, वो 300 million लोन अप्लाई किया है बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू, जो उनको मिला है थ्रू स्क्रीनिंग प्रोसेस के। तो ये डिफरेंट वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। और जो इस सिनेरियो में कोविड है, मैं तो कहूँगा कोविड के नेगेटिव एस्पेक्ट्स अपनी तरफ थे, लेकिन इसने ट्रेडिशनल को बड़ी रैपिडली चेंज किया है। एजुकेशन सेक्टर में, स्किल के सेट सेक्टर में, अब स्किल सेट ही चेंज हो गया है इसमें। और लोगों को, जो हम बड़ा शायद इस IT को या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हमें 8-10 साल लगते थे, तो वो शायद हमने 1.5 साल में तकरीबन एवरी कॉर्पोरेट सेक्टर, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू पुट क्वालिटी इन दैट वन। तो ये हमारे लिए अच्छा हो। और हमने कोविड में जो एक, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको बताना चाहूँगा, जब हमारा कोविड लास्ट ईयर आया, तो इंस्टीट्यूट वॉज क्लोज्ड, बच्चे घर में बैठे थे, जिस तरह इरशाद साहब ने बताया, उनके लिए कोई चीज़ नहीं थी करने के लिए। तो हमने उन दिनों में कोर्सेज चलाए, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन का था, अली बाबा के थे। ये कोर्सेज हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किए फ्री ऑफ कॉस्ट, डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी उस वक्त इन चीज़ों की। और फिर हमने फ्रीलांसर्स के जो कोर्सेज थे, जो मैट्रिक पास बच्चा है, जो इंटर पास बच्चा है, उसके हमने फ्रीलांसर्स के, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग था, वेब डिजाइनिंग था। और हमने जब उसके कोर्स के एंड पे भी ट्रेंड अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स इन दिस कोविड विद द 3 बैचेस। जब हमने उसका क्या कहते हैं फीडबैक ली, तो हमें पता चला कि 3 महीने के कोर्स करने के बाद जो पर बच्चा कमा रहा है उसमें एवरेज, यानी दैट वेरीज फ्रॉम 25,000 to 150, बट जो एवरेज थी दैट वो 36,000 पर मंथ पर बच्चा।
تو اب جو ہم اگلے سال کا پلان بنا رہے ہیں تو اب اس میں پلان کر رہے ہیں کہ اب جو ہم اسکل سیٹ ہے اب زیادہ ہم جو یہ ٹیکنالوجی ڈریون کورسز ہیں ان کو ایڈ آن کریں. جب تک ہماری انڈسٹریل اسٹیبلائزیشن نہیں ہوتی, گروتھ نہیں ہوتی, تو ہم لوگوں کو اکنامک اپرچونیٹیز ڈفرینٹ مینز اور ویز سے گھر پہ دیں. اور اسی طرح میرے خیال میں ہم نے آپ کے RPL اور بینک آف پنجاب کے ساتھ, اور ابھی ہم جو اس سال بنانے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں کہ دیکھیں ریکگنیشن آف اسکل نہیں تھی. We have celebrated International Skill Day yesterday. اور ہم نے جو ٹاپرز تھے پنجاب کے ٹاپ 3 پوزیشن ہولڈرز ان کو ہم نے کیش پرائزز دیے 150, 1 لاکھ اور 75,000 تاکہ بچوں کو انکریجمنٹ ہو اصل میں. اور پھر کل منسٹر صاحب نے ہمارے کہا کہ ہمیں پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت چاہیے کہ بجائے ہم نارمل ایجوکیشن میں بچوں کو بھیجتے ہیں ہم ہینڈز آن اسکل کی طرف بھیجیں. دس از دی ہائیسٹ پیڈ جاب انٹرنیشنلی, بٹ ہمارے یہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, شاید وہ یعنی ریسپیکٹ نہیں دیا جاتی جس سے بچے تھوڑا رجسٹ کرتے ہیں یا اس طرف نہیں آتے. تو ایک نیشنل کمپین اگر ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کریں گے, جو ہم ہیوج ہمارے پاس یوتھ بال جائے, یہ ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور رسک بھی ہے. لیکن ہم کتنی اس کو اپرچونٹی کیش کرا سکتے ہیں وہ میرے خیال میں ہم سارے پبلک پرائیویٹ سیکٹر اپنے امبریلاز میں اور ایک ڈرائیو کی طرف چلیں گے, ہر ایک اپنا رول پلے کرے تو شاید ہم زیادہ اس میں آؤٹ پٹ ڈلیور کر سکتے ہیں. تھینک یو. Because thank you so much, Amir Aziz Saab. And I think this is exactly the idea that we're trying to move towards is کہ کس طرح, and you'll see even in the panel ہماری representation at both of public and private sector, so that there's able to be any type of like synergy that can come about this and how we can actually move forward together. And آپ نے بہت interesting points touch point کیے ہیں, but and these were actually specific questions that I was going to be asking you, but what we can do is we can dig a little bit deeper into these as we go along. But میں آپ کے وہ کووڈ والے kind of area سے تھوڑا سا sprout out کروں گی, and I'll take it and I'll actually ask Adil and Zartaj both this. Okay, and maybe both of you have seen with Adil in the private sector, you know, in Citibank as well, corporate sector, kya changes I am, Zartaj also with all the skills that you're providing, you know, youth and kind of the evolving skill set that you've seen in COVID. What are some of the new things that have come out that you think are very important for employability for youth, right? Is there something specific? I know that you're looking into cool things like, you know, space education, things like that. Is that something that is really going to be useful and kind of, you know, take the next step after COVID? And also with the deal, you know, private sector mein, within City Foundation, within any corporate organizations, telecoms, what do you think are the next kind of steps for youth to be taking? What kind of new skills do they need to develop, and how has COVID really affected that for them to move forward? Any thoughts on this? Adil, do you want to start off? Sure, I'll start off. Okay, so I look at this very differently from, you know, with all due respect to all the other panelists. See, COVID has really shaken up things, and I don't think anybody knows what's happening. And if anybody says at this point in time that we know what's happening, I mean, that it's not possible, because the biggest organization in the world are right now confused as to how this whole, workforce scenario is going to unfold. Because you see, basically the future of work is a very complex topic to speak about, because it's changing very quickly. It's very volatile, it's uncertain, it's complex, and it's very ambiguous at this point in time. I mean, you know, there are researches being conducted by Citi, by other organizations, you know. I mean, if I just talk about World Economic Forum, according to them, they said that, you know, nearly 50% of companies expect that by next year, automation will lead to a reduction of half of their, you know, full-time workforce. And with almost like, you know, half of all employees that will be left behind would require significant reskilling and upskilling. Now, this reskilling and upskilling is not basically, you know, hands-on skilled jobs. This is the whole dynamics is changing with regards to, and I believe Zartaj will be able to add more light onto this, but according to us, I mean, you know, career progression is no longer linear. मतलब अगर आप एक जॉब में इदारे में और जॉब करने जाते हैं तो वो आपकी प्रोग्रेशन लिनियर नहीं है कि आपने पहले एक प्रमोट होकर ऊपर होना है, फिर उसके ऊपर जाना है, फिर उसके बाद इवेंचुअली जाके सीईओ बनना है. मतलब अब तो एक एवरेज बंदा जो है वो कोई 5 से 7 दफा तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो है जॉब्स और करियर्स बदलता है. And you know, and as per LinkedIn, I believe, you know, young workers are likely to change jobs 4 times in the first 10 years after they graduate. And the thing is कि अब अगर हम employability देखते हैं, and you know, the way things have changed, and especially after COVID, if we are receiving a CV of a person who spent 8 to 10 years in one job, we probably don't want to hire him because he doesn't have that flexibility or has not been able to develop that skill set,
where he can adapt to change, and change is happening extremely rapidly at this point in time. And if you look at other entities like McKinsey, predicts that by the end of 2021, which is by the end of this year, gig jobs will actually outnumber the traditional 9-to-5 jobs, office-based jobs. There are, about 60% of the workforce will consist of freelance professionals. Now, this freelancing is basically the opportunity for the youth, because given how things are evolving with Zoom coming into the picture, with video conferencing happening, with borders actually being removed from the whole global space after having this interaction through video. This is where the opportunity comes in. It's basically promoting the entrepreneurship mindset, because one person probably might have to work for 3 companies to provide their skills. For instance, if I'm a comms professional, maybe by next year, I would probably have to take on board, I'll probably be working for 4 different companies doing their comms for them. Or an accountant is probably working for 4 different companies for putting accounts together for them, because one company would probably not want to keep you full time. And that is the trend which we see is emerging. And these are going to be irreversible changes. These are not something which is going to go back to the old normal. Ki hum log jo hai, logon ko us tarike se taiyar kare. This, I'm purely talking about the corporate world or the urban side of the country. The rural side of Pakistan, I would say, is still in survival mode, because obviously the dynamics there are completely different. But on the urban side, if you're talking about youth, and the youth which has taken education and which has actually gone on to, and wants to develop skill set, this is they really need to do a lot of thinking about what they need to do. Because you see, we need to invest in like large scale job relevant skilling and reform our education systems to ensure that young people are learning the skills they will need to thrive. I know we don't have much time, so I'm just quickly, there is again, this is something that we talk at City a lot, and we talk at a lot of other forums. According to us, and this is not just us, this again, I'm going to go back to World Economic Forum research, etc., because we look into that a lot. The top skills for 2025 are going to be critical thinking, analytical thinking, innovation, problem solving, creativity, leadership, resilience, emotional intelligence, and digital literacy. And why are these going to be the most top skills for the world and for Pakistan? Is because these are the skills that cannot be replaced by the computer or a machine. Machine will take over, and the way companies are trying to reduce costs, machine will take over a lot of the work that we do, regardless of what skills we are training to whichever segment of the society. And we are an import-based economy. We are, no matter how much we tried, the reality is we will remain that. So wherever you're going to find the cheaper products available or services available, the private sector is going to go for that. We don't have that many industries, and not many industries are setting up in Pakistan at this point in time, which is the reality. So in order for the youth to know how to survive, I believe this is the skills that they need to work on, and this is what they would probably should be thriving, or you should be working to towards developing, so that whatever services they're providing could not be replaced by a machine. So this is how we think, at least here at City. Completely agree with you. And I think that's exactly what the thinking that we're trying to promote, as you said, that divide between urban and rural, that's the thinking we're trying to promote in rural as well, because the reality is that most of the jobs are going to be cross-country, as you said, without borders, that even the rural community should have the skills to be able to take, right? It's not just the urban centers that need to have. And these are all skills that are easily givable. Digitalization and things like this, these are all skills we're moving towards, even in rural, within PPF, and I know many other people, as TEFTA, Amir Zisab also says, TEFTA is also moving towards these things so that they're actually able to contribute to the workforce in the same way. Future work is very, very, I think, very iffy topic right now, because it's just all over the place. But one thing is for sure, like you said, is it is going to be moving a lot more towards technology. So that's definitely something that we should be incorporating. So if there is youth who's looking, कि हमने क्या next step करना है, कौन सी training देनी है, कौन सी चीज हमारी business को actually to the next level लेके जा सकती है, that will be that one layer of digitalization or technology that you can add, जहाँ पे आप, different countries को भी cater कर सकते हैं, different cities को cater कर सकते हैं, and you can actually reach out to more people. And main thing in your business or entrepreneurial mindset is creating those networks, or इस तरह आपके आसानी से networks भी बन सकते हैं. So thanks, Adil, for actually highlighting these points that are very, very important. Virtaj, thoughts on this? I know that you there's a lot you can add, so please go ahead.
Yeah, I know there's a lot to add, but I'll keep it short so the other panelists can also share their thoughts. Some few points that we believe, quickly मैं वो बता देती हूँ. Agreed on all the points that are raised by Adil. It's not an easy topic. Future of work is constantly changing, rapidly changing. हम लोग जो curiosity net पे believe करते हैं वो ये है, the reason जो हमने ये बनाया. And that highlights some of the pain points that we have seen. And some of them were that there is this training need that we feel is very important. And that is why I'm saying that we are on a mission to partner with universities to onboard their final year students, particularly who are about to enter the job market. उसके अंदर हमने 4 areas of training identify किए हैं, जिसके अंदर एक resume building, very basic, yet a lot of students need help with that. मैंने कुछ स्टूडेंट्स से बात की थी जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, बट जिनको ये नहीं पता था कि रेज्यूमे कहते किसको हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हाई स्कूल से बड़े बच्चे. सो रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू टिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हमारे बच्चों को अगर आप कहें कि जी आप मुझे बताइए, वॉक मी थ्रू योर प्रोफाइल, लाइक हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम उनसे कहते हैं वॉक मी थ्रू योर प्रोफाइल. And some of them don't understand. So how do you explain your journey? How do you present yourself in 1 minute? So ये वाली एक चीज, interview tips, आपने present किस तरह करना है अपने आप को. Financial literacy, हम कहीं स्कूल में नहीं सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, उन्हें नहीं पता होता उसका क्या करना है. Starting from there. So financial literacy is very important. Taxes का हमारे यहाँ खवातीन को जो अपने businesses कर रही हैं, Roma, you would know, startup system में आपको पता है women founders के साथ financial literacy, understanding the business actually, that is what we need. Curiosity Net पे I'm very happy to share कि हमारे पास ज़्यादातर female users हैं और वो ये trainings लेना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि अगर वो entrepreneurship की तरफ जा रहे हैं तो उनको क्या करना है, क्या ऐसी opportunities हैं जिससे वो connect कर सकते हैं. कोविड में जैसे I think आमिर अजीज साहब ने point out किया, नेगेटिव्स उसके अपनी जगह बट पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं. हम लोग ग्लोबली, हमारे लिए जो पॉसिबल नहीं होता, हम कितनी कॉस्ट करके, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है जहाँ पे हम जाना नहीं सोच सकते. तो दीज आर द बेनिफिट्स एज वेल. कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग्स, वी फील एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग, इट्स अ माइंडसेट, इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट. आई फील इट्स अ माइंडसेट जिसके लिए हमें अपने यूथ को तैयार करना है. ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस ही करें, वो चाहे नौकरी करें, चाहे वो अपने घर से काम करें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज कि आप जॉब्स क्रिएट करते हैं. अगर आप अपना छोटा मोटा भी काम शुरू करें, उसमें आप 1-2 लोगों को, दोस्तों को या फैमिली को शामिल कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग जॉब्स. सो आप एक बहुत छोटे से स्टेप से, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर सब जॉब देखने लग जाए तो नौकरियां तो इतनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली. सो इसलिए यूथ को ये समझाना कि you can create jobs with any idea. And I think ये जो कामयाब जवान या इस तरह के जो initiatives हैं, जो PPAF भी काम कर रहा है, कि आप स्किल के साथ उनको कैश दें जिसको यूटिलाइज करके अपना आइडिया कम से कम इम्प्लीमेंट करें. फेल हो तो वो उससे भी बहुत कुछ सीखेंगे. That in itself is a training. And so these are the trainings that we've identified. And the last one is tech, technology and tools. हमें पता है कि हर सेक्टर, हर वर्टिकल इंडस्ट्री इज डिसरप्टेड बाय टेक्नोलॉजी. सो जो पहली ट्रेनिंग है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है. अब आपने मुझसे ये सवाल किया था व्हाई स्पेस साइंस, और ये सवाल मुझसे बहुत होता है. हमें ये देखना है कि हमारा जो यूथ है उसका इंटरेस्ट कहाँ है. आप देखें सोशल मीडिया पे आपको ये बच्चे अपना टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं और फिर कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये ट्रेनिंग ले सकूं या मैं ये देख सकूं. सो वो टाइम जा कहाँ रहा है. So actually space science या social media से similar कोई platform बनाने का मकसद ये कि हम ये देखें कि इस youth का interest कहाँ है और वहाँ से उनका interest लेके हम उनको trainings वो provide करें उस platform के जरिए जो उनके लिए ज़रूरी हैं. I am a mother of 2 teenagers. मेरे बच्चे videos देखते हैं, सब कुछ करते हैं. इस pandemic में ये सब बहुत बढ़ गया. बट मैंने एक हद तक उनसे स्ट्रगल करने के बाद और जंग करने के बाद ये रियलाइज किया कि जो वो वीडियोस देख रहे हैं उससे भी वो बहुत कुछ अब्जॉर्ब कर रहे हैं और सीख रहे हैं. हमें उनके इस इंटरेस्ट को पिक करना है.
بیکاز میرا بیٹا ابھی ایک میکینیکل انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہے جس کے اندر وہ بہت ساری چیزیں جو سافٹ ویئر جو سیکھ رہا ہے اس میں وہ بہت ساری چیزیں وہ لے کے آتا ہے جو وہ گیمس کھیلتا ہے اس سے کنیکٹ کرتا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ پڑھنا کس طرح چاہتی ہے اور کس طرح سیکھنا چاہتی ہے. اور ہم نے بھی انڈرسٹینڈ کیا اپنے اسپیس سائنس ایجوکیشن انیشیٹو سے اور کیوریوسٹی نیٹ کے ذریعے ہم نے اب تک 10,000 سے زیادہ 12,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ینگ لوگوں کو ٹچ کیا ہے ٹریننگس کے ذریعے. ٹیچرس کی ٹریننگس کی ہم نے 5,000 سے زیادہ ٹیچرس کی. اور کیوریوسٹی نیٹ پہ اب ہمارے پاس تقریباً 4,000 3,500 لوگ ہیں ان دا پاسٹ 3 months جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یس دیر از اے نیڈ فار دس. اور ہم ان کو جاب سے اور انٹرنشپ اپرچونیٹیز سے کنیکٹ کر رہے ہیں جس کے لیے ان کے لیے آسان ہوگا یہ ڈھونڈنا. بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ایڈورٹائزمنٹس نہیں لگا سکتی ہیں, وہ آ کے اس پلیٹ فارم پہ اپنا ایڈ لگاتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو ایک دم سے وہ ساری چیز مل جاتی ہے بیکاز آف دا پلیٹ فارم. So I'll just stop here. I think these are the few things that we've identified and I've shared with you. Thank you. Wonderful. Thank you so much, Zartaj. Completely like on point کہ ہم نے exactly کون سی skills identify کرنی ہے and we have to move them forward. And I think that big step or that push is going to be from employers and also from the private sector and public sector that actually have to get this kind of ball rolling from their side as well. So yes, also raising awareness on the side of people who need to get the skills, but also raising awareness on the people who are providing skills, who are bahut sare log abhi tak bahut traditional ways mein cheezein provide kar rahe hain that need to actually, develop, and they need to be told that yes, this traditional skill is still there, but how can it be made, especially for rural communities and rural youth, how can it be made more up to date in today's world? So like aap kis tarah آج کل کے دن میں how can you promote it to international more foreign audiences اور کس طرح ہم ان کو access to markets دے سکتے ہیں. So I'm not sure, I think ma'am Roshan has dropped off, but I think we'll move on to Aamir Aziz Saab. And I think آپ کی جو introduction تھی اس میں آپ نے بہت سارے specific points raise کیے تھے that I wanted to talk to you about, specifically relating to technology, adaptation in many of the things that you do. So آپ نے کچھ programs بتائے آپ نے کس طرح اس کو آپ آن لائن لے کے آئے, and there's a lot of things that you did to be able to cater to the need at that time کہ وہ گھر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو they're still getting skills. آپ نے ایک اور بات بھی کی certification کی. So do you think that combining these two, there's a way forward جہاں یہ online skills, digital skills, the things that are really new in the space, ان کے لیے سرٹیفکیشن ہو سکتی ہے, اینڈ آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل ویز کس طرح اور ہم فارورڈ لے کے جا سکتے ہیں, کون سی نیو تھنگس from the provider, from the service provider side, like TEPTA, like CuriosityNet, anyone who's actually providing these services, what things do they need to do to move away from more traditional practices and move into a little bit more on ground need basis کے اوپر assessment? Thank you, Roma. So what we are planning, because last year جب ہمارا COVID آیا تھا تو we take it as a pilot projects. We have different interventions which go successfully, which don't, because we are not expecting کون سا کورس زیادہ اچھا مارکیٹ رہے گا اور جب ہمارے بچوں کو اچھی جابس مل سکیں گی. تو ہم نے ڈفرینٹ اسپیکٹس میں اور ڈفرینٹ سائٹس کے سارے کورسز آن لائن ٹیکنالوجی ڈریون کرائے. تو الحمدللہ اس میں جو ہمارا سکسیس ریٹس ہے دیٹ از کوائٹ گڈ. اٹ از 45%. کہ آپ کو 3 months کے بعد اگر 45% کو فورن جاب ملتی ہے اور دے ارننگ ہینڈز اور اکنامک اپرچونیٹیز اویل کر رہے ہیں, دس از مارولس سکسیسفل ان اینی اسکل پروویژن سیکٹر. دوسری جو چیز آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹریڈیشنل اسکل سیٹس کو ہم ریموو نہیں کر سکتے. اگر آپ کی انڈسٹری رہنی ہے تو کسی نہ کسی فارم پہ وہ اسکل سیٹ رہے گا. اب ہم اس کی جو ڈلیوری تھی اس ڈلیوری کو چینج کر رہے ہیں کہ جب ہم آپ نے انسٹیٹیوٹ میں یا باؤنڈری میں پریمیسز میں آ کے جو ایجوکیشن لینی تھی, تو ہمارے جو اگلے 2 KPIs بھی ہم رکھے ہیں کہ ہم اسکل سیٹس کو ایکسیس بڑھائیں گے, ریچیبلٹی ایوری پرسن جو کہ اسکول آ سکے جو نہ بھی اسکول آ سکے ان دونوں کو ہم اسکل سیٹ دے سکے ایٹ اے کنوینئنس پرائسز اور فری آف کاسٹ. اور تیسرا تھا کہ ہم کوالٹی انہانس کریں. جو ہم کنونشنل ٹریننگز ہیں جس میں آپ کے انڈسٹریل سیکٹرز کے ہیں, اے سیز ٹیکنیشینز ہیں, موبائل ریپیئرز ہیں, آپ کے الیکٹریشینز ہیں, واٹس ایور سول سیکٹرز کے پلمبرز ہیں, تو اس کے لیے ہم نے میرے خیال میں دنیا میں ابھی ڈیجیٹل کانٹینٹ پہ بڑا کم کام ہوا ہے. وی آر موونگ ٹورڈز دی LMS اور ان کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ شفٹ کر رہے ہیں. پورا ایک ای لرننگ پلیٹ فارم ہم بنا رہے ہیں جس میں سارے بچے جو ایک تو کورس جو میرا انسٹیٹیوٹ میں پڑھے گا, پھر دوسرا میری ویب سائٹ پہ وہ کورس لیکچرز اویلیبل ہوں گے.
तीसरा हम एक सिंगापुर की कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं जिसके पास सिर्फ वर्ल्ड में 5 या 7 कोर्सेज का 3D का डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि ये कोविड की वेव के बाद अब नाउ पीपल्स आर शिफ्टिंग कि ये चीज हमें चाहिए। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चा लैब में करता था वो सारा कुछ आपको 3D गेमिंग में वो चीज मिलती है उसको। मकसद उसने अगर एक एसी खोल के रिपेयर करना था तो ये सारा टूल आपको आपके कंप्यूटर पे मिलेगा, और वो कंप्यूटर की हम एक्सेस उसको कैसे देंगे, वो घर पे नेट पे बैठ के उसका बाकायदा उसकी असेसमेंट उसके अंदर शामिल है, उसकी एनरोलमेंट उसके अंदर शामिल है, और उसके जितना बिहेवियर रहेगा। अगर आपने मेरे ख्याल में वो एक अमेरिकन एलएमएस था ब्लैक बोर्ड के साथ, हम पूरा असेसमेंट प्लेटफॉर्म उससे ले रहे हैं। दैट इज कॉस्टली, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा, पब्लिक के डिपार्टमेंट को बजट कॉन्स्टेंट होते हैं, हम शायद रैपिडली इन्वेस्ट ना कर सके, तो हमने कहा था कि हम अगले साल एटलीस्ट 2 कोर्सेज हम उसके 3D कंटेंट में जाएंगे और फिर देखेंगे जो बच्चे को हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर होते हैं। देखिए ट्रबल शूटिंग में जब अगर हमारे पास एक इक्विपमेंट है, कोई एयर कंडीशनिंग में ले लेता हूँ या मोटर वर्कशॉप ले लेता हूँ, तो उसके ग्रुप्स में वो चीज बच्चे हैंडल करते थे। हम लोग भी जब स्कूल में फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते थे तो मेरे ख्याल में ग्रुप्स में वो करते थे, एक अप्रेंटिस होता था, 4-5 लोग काम कर रहे होते थे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की वजह से हमें ये बेनिफिट है, एवरी पर्सन जो बच्चा है वो खुद उस पर काम करेगा और उसको ट्रबल शूटिंग जो लर्निंग कैपेसिटी है, हम कह रहे हैं कि अगर कन्वेंशन हमें 20-30% दे रहा था तो दैट में रेज टू 70%, जो अभी तक हमारी अपनी एनालिसिस है। तो हम ये कन्वेंशन को एलएमएस प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट कर रहे हैं और नई जो असेसमेंट मेथोडोलॉजीज है वो अडॉप्ट कर रहे हैं और 3D कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो हम ई लर्निंग का एक पूरा यूनिट बना रहे हैं कि दूसरी जो स्किल सेट आपकी कोविड की वजह से चेंज हुई है, तो डिमांड चेंज, अमेज़न देखे ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके बढ़ गए हैं। अब जिस तरह अभी पहले अदील ने भी कहा था कि बिजनेस स्ट्रेटेजी, अब स्टोर्स पे लोग जाना पसंद नहीं करते, उसको ई कॉमर्स से मंगवा लेते हैं, किसी स्टोर से ऑनलाइन मंगवा लेंगे। तो अब उसकी ऑनलाइन में आपको, ये तो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके अलावा आपकी ऑनलाइन O&M सर्विसेज है, ऑनलाइन सेल सर्विसेज है, उसके लिए लाजमी तौर पे उनको एजेंट चाहिए जिसको वर्चुअल असिस्टेंट या अमेज़न वगैरह बड़े करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कैस्केड होकर नीचे भी आएगा। तो हम उसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग कंटेंट विद उसकी एक्रेडिटेशन बॉडीज और असेसमेंट्स के वो लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि अगले साल हम दोनों को ब्लेंड करके जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम कितना यानी मिटिगेट कर सकते हैं और ये कितना उनको एड्रेस कर सकते हैं। Okay, thank you so much, Amir Saab. I know, Adil, you have to drop off, and I think Ma'am Roshan also had another meeting scheduled. Adil, any closing comments before you have to leave? Any closing remarks? And then I'll go back to Amir Saab's discussion. No, just closing remarks. I mean, it is an evolving world, it's a changing world, and I think nobody has a right strategy or the fit at the moment. We are Pakistan obviously is working on having the fundamentals put in place with regards to preparing its youth, at least on the conventional side, to get the employment that it needs. But I think just a quick wrap up. I mean, I don't know. I'm not really able to see the audience at this webinar, but it's basically working on your personal brand is very important, right? Be it in the rural side or the urban side, your credibility needs to show off whenever you are sitting in front of an employer. And I mean, Zertaj, picked up the right points. When a lot of times I'm interviewing candidates, right, and they don't even know the history of the organization. Forget that, they haven't even been on the website or have the particular knowledge of the job that they're actually interviewing for. So it is important to work on your personal brand, have credibility, do your research when you're speaking to anyone, speaking to a client, speaking to an investor or whoever you want, whenever you looking for to get an opportunity, either to have them put money in your business or for you when you're looking for a job, and at any level. Be flexible. You have to unlearn the myths of the past. It doesn't matter that if you studied history or you studied engineering, you have to be flexible to understand how you navigate the future when you're building your career. You might end up being working in the accounts department after studying engineering, or you might end up, a historian might end up becoming a CEO of an organization. But so you have to be flexible and take, and adapt to your circumstances. I mean, that's pretty much the message that I wanted to give. I didn't have much time to elaborate on that, but yeah, that's all I wanted to say. Thank you so much, Adil. I think that's great on-hand advice from
someone who might be hiring for people who are watching. But I think a lot of the audience is a lot of development practitioners who are working with youth on skills. So it's great advice for them to pass on to the people they're working with. So thank you so much, Adil, for being online. Thank you. And great input. Please, we won't keep you. And so going back to Amir Aziz साहब आपके जो points थे, they were बिल्कुल completely, I think ये जो concept of, you know, I think you started off with piloting some of the interventions that you're doing. That concept itself is just so beneficial at the end, because you're going in small and you're able to see that if something fails or is successful, and then you can actually take it to scale up and actually start building on it. So, and at a time like this, you know, to use minimal financial resources and things like that, you have to have that kind of a step rather than just going all in something that you don't know is going to work or not, especially in these kind of new interventions. So it's very interesting. And from both of you guys, I mean, I was supposed to ask this from Ma'am Roshan, but I think she had to go. But if you have any opinions around how we can include more women into the skill development programs, and also, and this is the last question, we can move into question and answers, like one or two what audience has asked, but just around how can we increase female participation in skill programs and also lead that into having more female workers in the workforce in Pakistan. Any opinions on that? Amir Aziz Saab, if you want to start. Yes, thank you. Because in our infrastructure 4,000 institute, we have 167 institute for females, dedicatedly females, 100% females are getting the education from there. They are getting the computer education, then they are the diplomas of 3 years, the dressmaking, fashion design or whatsoever. Around 25 trades or technologies in which they are getting the diplomas from our side. Second, for there is an artisan who has very good skill set on blue pottery. The females are very good in designing the things, and then we offer them a Wasila platform for the e-commerce. They just at the home they can design something, and then they are put on that e-commerce site, and they will give they will sell that side will share their design items. They are getting the earnings. Or these all women belongs to the backward South Punjab areas. You know, in COVID, we have also run the Facebook female entrepreneurship program, She Means. And our girl from the Rahimia Khan district is the topper in that program, and she is the success story on Facebook. You can also see there that is the Pakistani girl who belongs to Rahimia Khan, and she Facebook declared her as a most successful story for the She Means entrepreneurship in their platform. They are just providing how can women come on the Facebook and they can sell their products, they can sell their skills, either designing or whatsoever comments. This is the one thing which we have done this. And similarly, जो हमारे फ्रीलांसर्स के कोर्स थे ग्राफिक डिजाइन में, उसमें हमारे 30 to 40% फीमेल्स शामिल हैं, जो घर बैठे कोई कोडिंग कर रही है, कोई ईद कार्ड डिजाइन करके भेज रही है, और दे आर अर्निंग हैंड्स. और अब मेरे ख्याल में उसकी सक्सेस के बाद जब हमने ये अपनी पब्लिश की है अपनी वेबसाइट्स पे, या कल जो बच्चियों को रिकॉग्नाइज भी किया था स्किल डे पे, तो वो सक्सेस स्टोरी के बाद लोग ज्यादा फीमेल्स आएंगे, क्योंकि देखिए उनके साथ फीमेल्स के साथ जो हमें जाती तौर पे समझ आई है, कम्यूटेशन इज द मेजर प्रॉब्लम. घर से उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियल एरिया इतना फार फ्लंग है, वो शायद वहां पे नहीं पहुंच सकती. अभी देखिए गारमेंट इंडस्ट्री फैसलाबाद में टेक्सटाइल बूम पे है, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग दिस फीमेल स्टिचर्स देयर. और हम भी उन्हें यही कहा है कि आप कोई उसको फ्लेक्सिबिलिटीज दें, आवर्स दें, घर मशीन दे दें, वो घर काम कर लेगी. तो वी आर मेकिंग एफर्ट्स कि हम कितना फीमेल को इसमें रोल प्ले कर सके, क्योंकि फीमेल की जो अभी एम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो लोकल हो या इंटरनेशनल बड़ी मिनिमल है. पाकिस्तान में तो 4% भी नहीं है. लेकिन जब तक किसी एक अभी स्पीकर ने कहा था जब तक वो 50% में नहीं आते तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की हम कभी बात भी नहीं कर सकते. ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा. फिर हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन इवन के स्टेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर भी है वो भी फीमेल्स के लिए अभी इतना इनकरेजिंग नहीं है जो वाइट कॉलर जॉब्स में भी है. तो जब तक ये हम कल्चर चेंज नहीं लाते, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लाते, और वो माइंडसेट चेंज नहीं करते कि शी कैन डिलीवर बेटर देन या इक्वल टू द मेल, तो हम शायद वो इतना नहीं कर सकते. बट वी आर स्ट्रगलिंग. हम जब भी कोई इवेंट करते हैं तो हम फीमेल चैम्बर्स की या फीमेल्स की जो अच्छी सक्सेस स्टोरीज है बिजनेस में से हम उनको बुलाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, ताकि उससे हमारी बच्चियां मोटिवेट हो, वो ये कल कह सकें कि अगर ये यहाँ पे सक्सेस इजीली पहुंच सकती है तो हम भी ये कर सकते हैं. दूसरा भी मेरे ख्याल में जैसे जरताज ने कहा था, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ माइंडसेट,
اور انفورچونیटلی کہ ہم جو بچے کو مائنڈ سیٹ دیتے ہیں وہ دیتے ہی جاب والا, اس سے ہمیں نکالنا پڑے گا. اسے اچھا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جاب کرے. ہمیں پبلک سیکٹر میں آپ کو بھی اپنے سرکلز میں اپنے آفس میں یہ فیل ملتی ہے, وین یو آر اسائننگ ٹاسک ٹو سم باڈی, اس کو بزنس سائیکل کا نہیں پتا ہوتا کہ اینڈ یہ کیوں کام کروایا جا رہا ہے. لیکن جب آپ انٹرپرینورشپ کی وہ بات کریں گے, اس کو مائنڈ سیٹ چینج کریں گے, تو جب بھی کوئی بھی کسی بھی ٹیئر پہ جب اس کو ٹاسک اسائنمنٹ ہوگی تو اس کا اینڈ ریزلٹ بھی کیلکولیٹ کرے گا, اور اس کی اوور آل آپ کی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. تو ہمیں یہ اب ہم نے, اور دوسرا جو ہمیں پرابلم آتی ہے سافٹ اسکلس کی. اب سافٹ اسکلز ہمیں جو ہم انٹرنیشنل جاب مارکیٹ گلف میں ہماری ریڈکشن پہ جا رہی ہے, انڈیا کیپچر کر رہا ہے, اور اس میں صرف ہمیں یہ ایک لیبل ملتا ہے کہ پاکستانی ورک ایتھکس از پور. اب ورک ایتھکس ہے کہ آپ جو سافٹ اسکل اس کو بنائی تھی آپ نے ڈیورنگ ایجوکیشن میں بنائی تھی, اسکولنگ میں بنائی ہے, یا ڈیورنگ اسکل انسٹیٹیوشنس میں بنائی ہے, وہ شاید پراپر نہیں تھی. تو جس طرح ابھی جاپان کی ایک ڈیمانڈ آئی ہے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو پائلٹ ود این آرگنائزیشن کہ ہم سمپل اپنے پاس آؤٹس کو 2 months یا 3 months کا, ایک تو 3 سے 4 مہینے کی جیپنیز لینگویج ہے, اور ساتھ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور ورک ایتھکس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, اور کچھ نہیں کروا رہے, تاکہ وہ بچہ جائے اس کو پتا ہے کہ میں نے جاب کیسے کرنی ہے. تو یہ جب تک یہ چیزیں آپ اپنے کریکولم میں ایڈ آن نہیں کریں گے تو ہم شاید اتنا یوزفل نہیں بنا سکتے. میں کلوزنگ ریمارکس اس میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ وی ہیو اے یوتھ پالیسی, بٹ نو باڈی از سیریس ٹو پلان دس یوتھ پالیسی. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس 60% یوتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان میں اپرچونیٹیز آ ہی نہیں سکتی. وی شوڈ گو سی دی ماڈل آف فلپائنز اور واٹس ہم ایکسپورٹ کریں. اور ہم نے اگلے سال کے پلان میں نے ریکمینڈ کیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ میں مقصد ایک ایسا اچھا انسٹیٹیوٹ ہم بنائیں جو ایکریڈیٹڈ ہو کسی اور ملک کے ساتھ. مقصد کوئی آپ آسٹریلیا کے ساتھ کر لیں, جرمن, جن لوگوں کو زیادہ لیبر چاہیے آپ اس کا ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوٹ رکھیں, تاکہ میرا جو بچہ ہے وہ اس کی اسکل سیٹس پہ کمپیٹ کرے, اسی کی اسکل سیٹس پہ وہ اس کو اسیس کرے, اور اس کو فوراً امپلائمنٹس ملے. اس سے آپ کی فوراً ریمیٹنس بھی آئے گی, اور اس کی آپ کی جو یوتھ ویلتھ کی بات ہے, ہم ایکسپورٹ ایچ آر کرنا شروع کر دیں گے اسکلڈ, بجائے لیبر ایکسپورٹ کرنے کے ہم اسکلڈ لیبر ایکسپورٹ کریں, جس سے ہمیں زیادہ بینیفٹس ہوں کنٹری کو بھی اور انڈیویجولس کو بھی. تو اس طرف ہمیں جانا چاہیے, اور ڈفرنٹ فورم پہ کہ ہم یوتھ پلس کیا سیگمنٹ وائز پلاننگ کر کے what we required for local industry, what we require for entrepreneurship, then what we need to export it, تاکہ تینوں سیگمنٹس پہ equally parallel کام کیا جائے. تھینک یو ویری مچ فار ارینجنگ such a good event, اور اس سے جو نالج شیئرنگ ہے, جو ایکسپیرینس شیئرنگ ہے ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس کا, that really adds value and that really encourage each of us کہ there is hope, everybody is doing something, and ultimately we will be go to our success road and achieve the goals. Thank you very much to all participants. Thank you, Amir Aziz Saab, and I completely agree. I think the end goal of all of these, log kehte hain webinars aap log itne kar rahe hote hain, and what's the end goal? End goal is the stakeholder engagement, speaking to each other, understanding कि हर कोई क्या different capacities में करता है, ताकि we can actually bring it together and have some kind of room for collaboration or synergy. Completely agree, and everything that you've said, I think this is so practical on ground. You're there, you understand कि policies किस तरह translate हो रही हैं, और किस तरह हमने वाकई में आपने बिल्कुल एक बात जो कही कि even job mindset में आपने entrepreneur mindset जरूर डालना है. This is a cycle. So it's never one or the other. Entrepreneur mindset is a necessity nowadays. So completely agree. Thank you so much for all your thoughts. Dartash, do you have any, even on my first question that I've asked around women engagement, and also if you have any closing remarks, because I do know that we've gone really over time and I'm sorry about that. So anything you would still like to share with the audience, and just to bring all of our discussion together, that would be great. Right. So yes, I agree. I think in terms of including women and females, success stories are very important. More than awareness, I think it is important to highlight whatever women are doing currently at all levels, be it public sector, private sector. ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی جو خواتین جو کام کر رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. I've seen it in the entrepreneur, the startup ecosystem, I would say, کہ کافی ٹریننگز اور ارینج کی جا رہی ہیں تاکہ ویمن فاؤنڈرس کو سپورٹ کیا جائے. بہت ساری چیزیں جو کارپوریٹ ہمیں اس میں چاہیے ہیں وہ یہ ہے کہ جابس کے اندر بھی کس طرح سے فیمیلس کو سپورٹ کیا جائے. there's quite a few things جو کہ وہاں پہ آئیں گی, تو پھر یہ ہے کہ women they feel that they're comfortable working. جابس میں تو کافی لڑکیاں نظر آتی ہیں, بٹ اوور آل اگر ہمیں ان کی پارٹیسپیشن بڑھانی ہے, so there is
awareness that needs to be created and highlighting the role of women. Closing remarks में I think I feel जो सबसे important चीज़ मैं youth को हमेशा अपनी हर talk में कहती हूँ कि एक तो technology disruption की वजह से the one thing that we have to do is कि हमें self learn करने में बहुत comfortable होना चाहिए. हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हमें कोई ट्रेनिंग मिलेगी. इंटरनेट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और ये सबके पास है. किसी के पास चाहे कुछ, मैं यूथ के बारे में ही सुनती हूँ कि उनके पास स्मार्टफोन ज़रूर होगा, हर किसी के पास. एंड विद अ स्मार्टफोन आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अब फ्रीलांसिंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अवेलेबल है. मुझसे थोड़े दिन पहले आई थिंक समबडी वाज आस्किंग कि जी जॉब्स नहीं है. I was like, अब तो फेसबुक ने भी जॉब्स का एक वो शुरू कर दिया, पूरा एक सेक्शन है जिसमें आप जाएं तो छोटी से लेके बड़ी जॉब्स तक आपको मिलती हैं. घर बैठे आपको जॉब्स मिलती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स हैं. आप शुरू तो करें कहीं से, और कहीं की कोई ज़रूरी या कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है. यू नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. आप जाइए, आप अप्लाई करिए. एंड अगेन वही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात जो मैं पहले भी कह रही थी, हमें प्रेजेंट करना नहीं आता है. सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन. हमारे यूथ को हमें ये एहसास दिलाना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी को ईमेल भी कर रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट भी लिखना है और एंड में साइन भी करना है अपने नाम से. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ये ज़रूरी हैं जो हमें सिखानी है. सो लर्न एंड अनलर्न एंड देन रीलर्न एंड सेल्फ लर्न एज वेल. मेरा तो यही वो है कि यू शुड बी कंफर्टेबल and one should be comfortable out of their comfort zone. I think ये हमें इस pandemic ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है. So हम इस बात को जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है. Thank you very much PPAF, Roma, Irshad Saab and all the other panelists. Thank you very much. Thank you so much, Dataj. I loved the last motto that you said and completely agree. There's all of this knowledge out there. Please, all of us, any of us, me, you, anyone can go and get trainings on anything they want. They're free of cost. There's so many opportunities. So why aren't we going out and actually taking them? Completely agree. Thank you so much, Dataj, for being online, and all the panelists. Irshad Saab, you have been there and you've actually been, supportive, and you've introduced PPF so well as well. I am looking at the questions and I feel like most of the questions have been answered that I've been going through. So hopefully I haven't left out any important aspect of the topic in any way. So we're good to close. I know we have gone over time a little bit because it's just such an interesting topic and there's so much to talk about. So thank you so much, everyone. And I want to give a shout out to our IT team, all of PPF for making sure everything runs smoothly, our comms team for actually getting everything together. And please watch out for more webinars from PPF. We have one very interesting one coming at the end of this month. So it's always informative. Like we said, it's all about network sharing and actually understanding what we all do, so we can also learn and also maybe repeat some things and actually, tweak them and learn from them and do them in different ways. Wonderful. Thank you so much, everyone. Please take care. And thank you for being online for so long. Thank you very much. Thank you, everybody.